गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक प्रवीण। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल स्टडी ऑफ एन एक्सटर्नल माइक्रोमीटर विच रेंज इज 0 to 25 mm एंड एल सी इज 0.01 mm दैट इज 10 माइक्रॉन। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट वी लर्न टुडे। आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ माइक्रोमीटर, वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोमीटर, डिटेल स्टडी ऑफ माइक्रोमीटर एंड लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू रीड माइक्रोमीटर इन इजी वे। Definition of micrometer. A micrometer is an instrument used for making precise linear measurements of dimensions such as diameter, thickness and length of solid object. माइक्रोमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, थिकनेस और लेंथ चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर: एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, इंटरनल माइक्रोमीटर, फ्लेंज माइक्रोमीटर, ब्लेड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर एंड पॉइंट माइक्रोमीटर। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। अब हम देखते हैं बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोमीटर। बेसिकली माइक्रोमीटर का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर चेकिंग करने के लिए होता है, और तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, diameter of wire and anything that can be enough to fit in between anvil and the spindle. These are the basic applications of micrometer. Now we have to know the parts of external micrometer: anvil, spindle, frame, lock nut, sleeve, thimble and ratchet are the main parts of external micrometer. Now we will study the details of every part. First of all, anvil, the shiny part that the spindle moves toward and that the sample rests against. मतलब माइक्रोमीटर में एनविल एक स्टेशनरी पार्ट है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। स्पिंडल, द शाइनी सिलिंड्रिकल कंपोनेंट दैट द थिम्बल कॉजेज टू मूव टूवर्ड द एनविल। मतलब स्पिंडल एक ऐसा पार्ट है माइक्रोमीटर का जो कि थिम्बल की मदद से ट्रैवल करता है। रैचेट, at the end of handle that limits applies the pressure by slipping at a calibrated torque. मतलब रैचेट एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम स्पिंडल को टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। स्लीव, द स्टेशनरी राउंड कंपोनेंट विद द लीनियर स्केल ऑन इट। स्लीव एक माइक्रोमीटर का पार्ट है जिसके ऊपर मेन स्केल लगी रहती है। फ्रेम, the C-shaped body that holds the anvil and barrel in constant relation to each other. एनविल एंड बैरल को स्टेशनरी पोजीशन में रखने के लिए जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उसको फ्रेम कहते हैं। थिम्बल स्केल, रोटेटिंग ग्रेजुएटेड मार्किंग्स। थिम्बल, अ कंपोनेंट दैट वंस थम्स टर्न्स, जिसको हम ड्रम बोल सकते हैं। स्क्रू, the heart of micrometer, it is inside the barrel. Now we have to know the operating principle of micrometer. Micrometer use the screw to transform small distances that are too small to measure directly into large rotations of screw that are big enough to read from a scale. The amount of rotation of an accurately made screw can be directly and precisely correlated to a certain amount of an axial moment. मतलब जो कि हमने अभी देखा था, स्क्रू इज द हार्ट ऑफ माइक्रोमीटर विच इज़ नॉट विजिबल। उसी स्क्रू का यूज़ करके हम रोटरी मोशन ऑफ ड्रम को कन्वर्ट करेंगे एक्सियल मोमेंट ऑफ स्क्रू में। दैट मीन्स लार्ज रोटेशंस ऑफ ड्रम इज ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्मॉल मोमेंट ऑफ स्क्रू। इसी सिंपल से प्रिंसिपल का यूज़ हम माइक्रोमीटर में करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माइक्रोमीटर, इट्स how to read micrometer. Let's take an example. To read micrometer, start by noting the value on the main scale. Here the main scale reading is 12 mm. Now we have to observe the readings on the rotating scale where it aligns with the zero line. Here we see that the rotating scale reading is aligns with 0. The line number is 30, 31, 32, 33. 33 number line is matching with 0 line. Hence, the rotating scale is 0.33. Now, to get final measurement, we have to add the values of main scale and the
rotary scale reading, that is 12 plus 0.33, that is 12.33. That means our total reading of micrometer is 12.33 mm. Now we understand the same concept by animated videos. We have taken an object of length d. Now we start operating the micrometer to measure length. Here we see that the main scale reading is 4 mm. Now we see on the rotary scale, it shows the reading is 0.14 mm. That means we have to add main scale reading and rotary scale reading, that is 4 plus 0.14 mm, that is 4.14 mm. So our total reading of length is d is equal to 4.14 mm. अब लास्ट में हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। हमने एक मेजरिंग पिन ली जिसका डायमीटर x है। नाउ we start to taking readings by rotating the thimble until it touches the measuring pin properly. Now we see the reading on main scale. Now we see the reading on main scale, it shows 3.5 mm. अब हम देखेंगे कि रोटरी स्केल पर कौन सी लाइन जीरो लाइन को मैच कर रही है। Here we see that the 48 number line is matching with zero line, so that is 48 divided by 100 is 0.48 mm. Now जैसे कि हमें पता है total reading is equal to main scale reading plus rotary scale reading. So main scale reading is 3.5 mm and rotary scale reading is 0.48 mm. By adding both them we get 3.98 mm, which is our measuring pin diameter. ओके, इस प्रकार हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ विड्थ डायमीटर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।